में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज फिर लौटता हुआ। कल भी सेकंड हाफ में खरीदारी हो रही थी। 500 के लिए एक मौका अभी भी है, तेजी की पोजीशन लेकर चले। ये है फिलहाल रूपक का पिक का। अच्छा, गौरव और पंकज के हाथ में एक एक जगह खाली है। अब उनसे पूछेंगे कि इस समय ट्रेड देना है या फिर आगे। फिलहाल JSPL आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर का स्टॉक। लगभग 3 से 4% के गेन्स। एक तो चीज है कि मेटल्स में एक पुल बैक देखने को मिला है। दूसरा ट्रिगर फैक्टर जो कंपनी के फेवर में जा रहा है कि कंपनी का जो भी विदेशी कर्ज था वो पूरी तरह से चुका दिया है। अब डेट टू एबिटा करीब 0.55 टाइम्स के आसपास रहेगा। एक समय था जब $1.8 बिलियन का दरअसल पीक डेट ओवरसीज मार्केट से इन्होंने लिया था, वो पूरा डेट इन्होंने चुका दिया। कंपनी के CFO राम कुमार रामास्वामी जुड़ रहे हैं। मिस्टर रामास्वामी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। इफ यू कुड गिव मी एन इनसाइट कि अब ओवरऑल डेट की पोजीशन क्या है? आई अंडरस्टैंड you've paid off all the international debt, but what about the debt on the Indian markets or the Indian entity? Sure. Thank you. Good morning. Yes, indeed, as you said, we had a peak debt of around $1.8 billion overseas, and we have brought that down to almost close to zero as of now. As far as the Indian debt is concerned, the last quarter we had reported a 7,000 crore of net debt. And plans to perhaps pare this debt off? Anything that you'd be able to add? Of course, I mean, we are of course looking at reducing our gearing and operating at a very, very conservative gearing, of less than 1.5 through the cycles. So that is how our journey will be. क्योंकि आप लोगों ने गाइड किया था that you'd probably be debt free by the end of this fiscal, which is FY23. तो उस राह पर तो इंटरनेशनल फ्रंट पर आप निकल चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि फिर भारत में भी वो डेट जो बचा है आप कम करते हुए दिखाई देंगे। Of course, we are on a journey of continuous deleveraging, and we will be on that journey. Okay, and while you're deleveraging, sir, क्या कैपेक्स को आप थोड़ा सा और कंट्रोल करने वाले हैं करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर, or you're going to go ahead with the capex that was announced of nearly 18,000 crores for this fiscal? I think we will of course be very, very focused on ensuring that capex plans are completed on time and within budget. Having said that, we're constantly monitoring, the leverage that we have on our balance sheet, and we will ensure that we are operating on a very conservative basis, as what I mentioned just now. I get that point. So if you could just give me an idea as to how the market stands at this point in time. How are your overseas operations doing really? What is the demand situation like at this point in time? Sure. I think the key assets of Australia, Mozambique and South Africa overseas are performing. We've been reporting positive EBITDA on them in the recent quarters, Harshada. Okay. And any insight on demand per se? So demand in the Indian market has of course been reasonably good. The volumes have been reasonably strong in the quarter. Of course, there is an impact due to the export duty, and therefore our export volumes have got impacted. But our domestic volumes have been doing reasonably well. Okay, we'll touch base with you soon, Mr. Ramaswamy, because hopefully that export duty would be reconsidered. The government has shown inclination towards it, and once that happens, we'll reconnect with you as to how much of a fillip will that bring to the business overall. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। तो वो स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगभग 3 से 4% के गेन्स पर कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जो लेवरेज है, जो बाजार से कर्ज उठाया हुआ है, उसको काफ़ी कम करने पर जोर दे रहे हैं। ओवरसीज ऑपरेशंस का जो कर्ज था वो लगभग पूरा चुका दिया है, लेकिन अब इंडिया डेट को कम करने पर फोकस रहेगा। लेंगे एक ब्रेक इस मोड पर। 419 के आसपास JSPL कर रहा है ट्रेड। आगे गौरव और पंकज से होगी बातचीत, देखते हैं वो एक एक और ट्रेड जोड़ते हैं या नहीं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।